Hello, good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. I hope आप लोग अच्छे हो. So, in today's class, we are going to revise modern physics. ठीक है? आज का class conceptually it won't be that hectic. I mean, calculation may seem lengthy, but as far as the questions that I have collected, I have seen calculations are also not that much. So, first let's start with one yesterday's question. This was this. Let's do it. After that, we will move on with क्वेश्चंस इन मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, चलो. ट्राई किया था सबने इस क्वेश्चन को. यस, ओके. सभी ने कर लिया है. तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आरसी सर्किट, राइट? आरसी सर्किट का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वो ऑलरेडी मस्ट बी अवेयर ऑफ. आरसी सर्किट में व्हेन यू आर चार्जिंग द कैपेसिटर, वी राइट चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लाइक दिस, है ना? Where tau is your what? This is your time constant, which is R into C in case of RC circuit. Done it? So यहाँ भी हमें हमें compare क्या क्या करना था. We were supposed to calculate first Q naught, and then we were supposed to calculate what? अल्फा. ठीक है. सो हमारा टास्क क्या है? चार्ज के एम्पलीट्यूड को निकालना एंड 1/टाउ को निकालना, विच इज अल्फा. ठीक है. So how you will calculate maximum charge when there will be maximum charge on the capacitor at that time? It will be, circuit will be in a steady state, right? है ना? Maximum charge यहाँ तक आ गया है. Circuit will be in a steady state, and in a steady state we already know uh, circuit capacitor becomes or behaves like a insulator. ठीक है. तो अगर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा at that point of time, then what will happen? Total current in the circuit will be how much? It will be equal to V divided by R1 plus R2. So what will be the potential difference across the capacitor when capacitor will holding maximum amount of charge? It will be same as potential difference across the R2. So let's calculate potential difference across capacitor. That is equal to IR2. So this is equal to, again, same current I am sending in this arm. Why? Because in a steady state or when capacitor is having maximum charge, no current will flow in this side. ठीक है? Because this is acting as an insulator. So IR2 जब आप करोगे, current is V by R1 plus R2 into R2. Now, what will be the charge, maximum charge on this capacitor? So, Q naught will be equal to C into Vc. So, that is equal to CVR2 divided by R1 plus R2. So, this will be the answer, right? Q naught. How you will calculate tau? So, देखो, अगर simple circuit होता है ना, if there is one capacitor, one resistor, जैसे circuit हमने ऐसा simple देखा है. If this is connected to the battery and capacitor is getting charged, then we write tau as, if this is R, this is C, then RC. Done. Here there are two resistors. How we will calculate it? So simple है. जब भी तुम्हें ऐसा सर्किट दिखे, कंफ्यूज हो, तो एक काम करो, वोल्टेज जो बैटरी है ना उसको शॉर्ट सर्किट कर दो. सो यहाँ से इसको कर दिया मैंने शॉर्ट सर्किट. यानी कि ये सर्किट कुछ कैसा दिखेगा? कंप्लीट ऐसा. ठीक है. एंड देन अक्रॉस द कैपेसिटर कैलकुलेट द
आर इक्विवेलेंट। सो तुम्हें करना क्या है, जो बैटरी का आर्म था उसको मैंने कर दिया शॉर्ट सर्किट, ये रहा यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पे ये कैसे होगा, across the plates of capacitor we have to calculate R equivalent, and then there is this was your R1, this is your R2, across plates of capacitor we have to calculate R equivalent। तो यहाँ पे आप बैटरी ऐसे इंसर्ट करके देखोगे to check if R1 R2 are in series or parallel, so you can clearly see both will share the same potential। ठीक है, so R1 and R2 in a steady state they are behaving like what, they are behaving like as if they are in parallel। ठीक है, so R equivalent आप क्या लिखोगे, R1 R2 by R1 plus R2। So what will be tau का value? It will be C R1 R2 by R1 plus R2। What will be the value of 1 by tau which was alpha? क्योंकि यहाँ पे माइनस अल्फा टी, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो 1 by tau is equal to alpha, and that will be equal to R1 plus R2 by C R1 R2। So this is how we will be solving such sort of question। ठीक है, चलो डन है। लेट्स नाउ डू सच क्वेश्चन। मॉडर्न फिजिक्स में देखो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, आई वुड से क्वेश्चंस आर रियली वेरी इजी। थिंग इज यू शुड नो derivation वाला thing, from where you derived radius of nth orbit, how you derived energy of nth orbit, how potential energy kinetic energy is related, such sort of things will come into use। उसके बाद कुछ करना नहीं है, बहुत हेवी कॉन्सेप्ट कुछ लगाना नहीं है, बहुत ही इजी है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन, ठीक है, टू प्रैक्टिस। I will be giving you time, do it, take your time, do it। मैं छोटे पॉइंट्स लिख देती हूँ। हमने रेडियस और वेलोसिटी को या एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिक फॉर्मूला यूज किया था हमने। न्यूक्लियस होता है ना, और चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लगाया था अगर याद हो तो। सो दैट फोर्स इक्वल टू हमने क्या लिखा था, एम वी स्क्वायर बाई आर। दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन वी यूज, and then commonly getting used was angular momentum का formula mvr is equal to nh by 2 pi। So these are the two important formulas we have to use, or we have already used while calculating r v e as a function of n and z, right? So do this।
Anybody got any option? ए बी तो Anybody? आ रहा है। ए और बी आ रहा है। यस मैम। ओके, स्टार्टिंग सही में है, करो। इट फील्स करेक्ट। चलो डन है, ठीक है, साथ में करते हैं। चेक कर लो, तुम लोग क्रॉस चेक कर लेना। सो व्हाट आर द थिंग्स हियर? फोर्स, I mean here the force thing is given. Influence of central force F equal to minus kr. So just like in the derivation we have written force is equal to k into force acting on electron into force of, sorry, into, I mean क्या बोल रही हूँ मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, के इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस दैट इज जेड इंटू ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये किया था ना हमने। हियर वी कैनॉट डू दिस थिंग बिकॉज हियर द फोर्स इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अगर गिवन है तो वी डोंट हैव टू यूज दिस। सो हियर फोर्स इज हाउ मच? minus kr. What else is given? Potential energy is given, which is function of r, and it is equal to kr square by 2. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो गिवन एंड एक एन एल इक्वल टू एन एच क्रॉस। एच क्रॉस यहाँ पे मिसिंग है, एन एच क्रॉस, एच क्रॉस इज एच बाई 2 पाई। नाउ इफ v and e आर द स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बेसिक टू इक्वेशंस लिखोगे। फोर्स का वैल्यू अगर देखो तो के आर है, एंड दिस के आर विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। लेट्स कैलकुलेट v का वैल्यू। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज के आर स्क्वायर बाई m। ठीक है, सो वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ r ओवर हियर। r हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं? सो वी हैव एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू एम वी आर and this is equal to nh cross. So if you see here, r is equal to how much? That is nh cross divided by mv. So put it here, kr का square that is n square h cross का square divided by m square v square. फिर से v square इधर जाएगा, then you will get v का power 4 and this is equal to k n square divided by m square एंड एच क्रॉस का स्क्वायर। ठीक है, एन का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेक कर लेना एक बार। हो रहा है ना? नहीं, एन का पावर मैंने सही सही लिखा है। आर का स्क्वायर को एन का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, देयर वाज वन मोर एम हियर, सो दिस इज एम क्यूब बेसिकली। ठीक है, सो अगर आप वी स्क्वायर का वैल्यू निकालो तो कितना जाएगा? एन एच क्रॉस, NH cross divided into K by root under M cube। ठीक है, सो V स्क्वायर किसके बराबर होगा तुम्हारा? NH क्रॉस रूट अंडर K by M cube। so this option seems correct। R का वैल्यू निकालना है, सिंपली V का वैल्यू यू पुट इट हियर। ठीक है, R इज इक्वल टू हमें क्या मिला था? NH क्रॉस बाई MV। so simply here velocity का वैल्यू you will be putting whatever you have got just now। ठीक है, एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? आर, बिकॉज हियर यू हैव टू कैलकुलेट आर स्क्वायर। सो आप यहाँ पे आर स्क्वायर लिख देना, दैट विल बी एन स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर वी ऑलरेडी नो, वी कैन पुट इट, वी कैन सी। सो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट। नाउ एल बाई एम आर स्क्वायर इज रूट अंडर के बाई एम, दैट ऑल्सो यू कैन चेक, क्योंकि एल इज इक्वल टू क्या है? एम वी आर। वी का वैल्यू पुट करो, आर का वैल्यू पुट करो, यू कैन चेक, है ना? क्योंकि अगर ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है तो एल इक्वल टू एम वी आर में यू जस्ट डू वन थिंग, वहां पे ऐसे कर सकते हो, एल इक्वल टू एम वी आर है, एक काम करना, एल का स्क्वायर लिखना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, देन टेक द रूट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, सो वी हैव टू चेक फॉर सी। नाउ वी नीड टू चेक फॉर एनर्जी ऑल्सो। एनर्जी के लिए हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सो वाइल अगेन डूइंग द कैलकुलेशन, हमने एनर्जी के लिए बेसिक इक्वेशन लिखा था। क्या लिखा था अगर याद हो तो? सो there were two sorts of energy because this is charge system thing, and also electron is moving, so because of movement there is kinetic energy, because of a charge system there is potential energy, so this is your total energy। and here in the question what is said?
if V and E are the speed and total energy of the particle. So total energy आप कैसे निकालोगे? Kinetic energy plus potential. So kinetic energy will be half mv square. Potential energy will be equal to how much? Is that given? It is already given. Kr square by 2. So put here kr square by 2. That will give you total energy. So to calculate total energy, we have to simply put the value of v square. So I have done over here. When you will put all the value, I mean simply one value you have to put v square. I have put it here, but the value we are getting is not exactly with the option given. So this option is not correct. C maybe is correct. You can put and check the value. So A, B, C are correct. C कितनी का correct आया है या I need to check? Let me know. Yes. Done है? आ जाएगा? Yes, कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है. चलो, let's do this now. This is more conceptual, I would say. So read the question carefully, try thinking around it, and then let me know your options. Okay? Anyone got anything? Should we discuss? चलो एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है. What is this? The binding energy of nucleons in a nucleus can be affected by the pairwise Coulomb repulsion. ठीक है. सबसे पहले देखो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है. Just see when an atom gets formed, what happens? There is nucleus getting formed, right? And inside nucleus there are two things, right? Neutron and proton. ठीक है. And the size of nucleus, if you remember, it is of the range of 10 to the power minus 15 meter. So this is very 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 small. ठीक है. और इस छोटे से स्पेस में if you are
keeping two positive charges together, it has a simple meaning that there is not just electrostatic force operating, also some other forces that we know, nuclear force. So inside nucleus, neutron plus proton hota hai. Two forces act. One is your nuclear force and another is your electrostatic force. You already must have studied nuclear force strength is far, far greater than that of electrostatic force strength. So definitely attracting force will dominate over repulsive force, and that is why nucleus is getting formed. क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है ना, दे वोंट बी कन्फाइंड इन अ वेरी लिटिल स्पेस. अगर दो लोगों के बीच में कटअप है, आई मीन टू पीपल, इफ they never agree of each other, they won't be together for long, right? Or you cannot bring them together. Same thing is happening here. इसका मतलब है कि nuclear force dominates. And what sort of force is this nuclear force? Attractive force. एक चीज और तुम लोग याद रखना, these are small small concepts. Whenever attractive force acts on things, what happens? Its potential energy decreases. जैसे तुम अर्थ के केस में देख लो, when we are closer to the earth, our potential energy is lower, है ना, minus g m by r. As you come closer to the earth, potential energy decreases, r will decrease. So overall this magnitude will increase, with negative sign it is decreasing. Why? Because as we are coming closer to the earth, attractive force is dominating. So here also, what is the thing? Nuclear force is dominating, attractive force is there, and that is why energy in the process gets released, and so its potential energy becomes very small, very little, very minimum. And that is why this nucleus is stable. अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि न्यूक्लियस का binding energy is getting affected by pairwise Coulomb repulsion. So repulsive force की वजह से what will happen? Binding energy will increase or decrease. पहले मुझे ये बताओ. We need to understand basic concept. Binding energy होता क्या है? Binding energy is the amount of energy released when nucleons come together to form nucleus. So this is the energy released, right? And when more energy will be released, when more attractive force is acting. Okay? So if you are taking repulsive force into account, what will happen? बाइंडिंग एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स अगर आप अकाउंट में ले रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स घट रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड? And less. लेस. यस. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी है कूलम रिपल्सन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. नाउ दिस इज गेटिंग अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम रिपल्सन. अब सपोज कर लो न्यूक्लियस में हमारे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, जेड. वही दिया है ना क्वेश्चन में, एटॉमिक नंबर इज गिवन और नॉट? नो, ऑप्शंस में गिवन है जेड इज द एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो लेट्स से जेड इज द एटॉमिक नंबर. हर दो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एंड हेंस हर दो प्रोटॉन के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है which is equal to kq square by r if r is the separation between two protons. And in question it is said that uniformly distributed they are. So we can assume that between two proton distance is what, constant, that is small r I'm taking. Okay. So how many such potential energy will be there? There are z number of protons. So सारे प्रोटॉन्स दो दो पेयर बना लो, तो दो दो पेयर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है. हाउ मेनी सच पेयर्स विल बी देयर? ZC2, NC2 आई एम डूइंग. सो ZC2, you will write this as z factorial by z minus 2 का factorial by 2 factorial. So what you are going to do is z minus 2, sorry z minus 1 होगा ना पहले, z minus 2 का factorial divided by z minus 2 का factorial, 2 का factorial. So this is this and no, nothing else. ठीक है. सो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी एग्रीगेट में बोलूं कितना जाएगा बताओ? दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑलमोस्ट z minus 1 by 2 और
ईबीपी माइनस ईबीएन, ईबीपी तुम्हारा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, ईबीएन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ओनली न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग, नो रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग। सो बिकॉज ऑफ टेकिंग के साथ तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा नहीं। सो बेसिकली दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, डन है। सो ईबीपी माइनस कांस्टेंट आप कर रहे हो, इज दिस प्रोपोर्शनल, पी इज व्हाट, सॉरी कहाँ जा रही हूँ, थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं। व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी, yes, so this is your what, this potential energy will be directly linked with the binding energy of proton. So this is directly linked to the potential energy, and this in return will be direct, ठीक है। सो दिस विल बी द थिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है हमें, दिस इज करेक्ट। नाउ दिस इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर -1/3 दिख रहा है, होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का टर्म है, और रेडियस को एटॉमिक नंबर से हमने रिलेट किया था, आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, राइट। तो यहाँ पे आर को क्या लिख सकते हो, आर नॉट ए का पावर 1/3, यानी कि E binding energy of proton directly proportional to A का power -1/3. So this option, बताओ, अब तुम लोग ये मुझे सोचकर बताओगे। मैम क्या बताना है? बताना है कि सी ऑप्शन तुम्हें पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव, करेक्ट है या रॉन्ग। मैम करेक्ट है, जेड तो हाइड्रोजन तो है नहीं उसमें, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। जेड की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इज दिस टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, कहाँ लिखा है। नो मैम, आई एम टॉकिंग फॉर्मूला, जेड इंटू जेड -1। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैम नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। ओके, हर्षिता, पोटेंशियल एनर्जी हम किसका लेते हैं, पहले मुझे ये बताओ, चार्ज सिस्टम का लेते हैं ना। न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन देखो, जब हम ये पढ़ रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग बाइंडिंग एनर्जी गेटिंग अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम रिपल्सन। सो कूलम रिपल्सन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी कैसे अफेक्ट हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। So if you talk about neutron and proton, there won't be potential energy because of electrostatic force acting, right? क्योंकि इनके बीच nuclear force, there is potential energy of neutron proton system and neutron neutron system, right? It's there, but यहाँ पे मैम वॉइस लैग हो रही है। voice is lagging a lot, okay? Is it same for everybody? देखो कभी कभी नेटवर्क बीच में फ्लक्चुएट करता है। इज इट फाइन नाउ? यस, ओके हिमांशु, ठीक है।
चलो, सो हर्षिता क्या डाउट है तुम्हारा? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता दो, आई विल मेक इट क्लियर। चलो ठीक है, एक काम करती हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर डाउट हो रहा है तो। क्वेश्चन ये दिया है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम रिपल्सन। जनरली अभी तक हमने जो किया ना, जो भी एक्सरसाइज तुमने पढ़ा, वी एक्चुअली नेग्लेक्ट दिस पेयर वाइज कूलम। क्या होता है तुम्हारा, बहुत करके न्यूक्लियर फोर्स, दिस पेयर वाइज कूलम रिपल्सन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज दिस एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस। अब देखो, मैंने न्यूक्लियर फोर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि देखो, nuclear force will contribute both in the binding energy of proton and binding energy of neutron. Done it? Because nuclear force will act between mass number 8. So between proton, proton, between proton, neutron, between neutron, neutron, it will act, right? So because of that, potential energy of system will incorporate force and न्यूक्लियर फोर्स को मैंने हटा दिया, क्योंकि सेम इफेक्ट विल बी देयर इन ईबीएन आल्सो। सो ईबीपी माइनस ईबीएन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम रिपल्सन थिंग। वॉइस इज नॉट क्लियर। नेटवर्क तो सही दिखा रहा है यार। लैग बहुत हो रही है। ब्रेक हो रही है क्या? बीच हाँ, बीच बीच में रुक जा रही है। ओके, सो मच लैगिंग। अच्छा हर्षिता, आई विल डू वन थिंग, आफ्टर द क्लास आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? आई विल सेंड यू थिंग। दीक्षांत, ओके, शुड बी वेट फॉर सम सेकंड्स। क्यों हो रहा है ये? नेटवर्क तो सही दिखा रहा है। मैम राइट नाउ इट्स करेक्ट, लाइक अभी ठीक है। अभी ठीक है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट और नॉट? मैम मैं आपसे व्हाट्सएप पे ही पूछ लूँगी। मैम एक्चुअली मेरा लीव भी हो गया था। अच्छा, एक काम करती हूँ, सभी को फॉरवर्ड लेकर चलते हैं। एक काम करती हूँ, आफ्टर द क्लास आई विल टेक्स्ट यू और आई विल वॉइस मेल यू, ठीक है? व्हाट यू से? तुम्हारा डाउट क्या था? चलो एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, लेट मी लुक एट डाउट। तुमने बोला ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हाउ बाइंडिंग एनर्जी विल गेट अफेक्टेड। तो बेसिकली दैट विल अफेक्ट ओनली बाइंडिंग एनर्जी बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटोन एंड प्रोटोन, ठीक है? सो इसलिए मैंने ईबीपी को बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने की कोशिश करी। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग डन, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर, बट देर इज नॉट just two charge, two protons there. If atomic number equal to z minus 2 or something, z minus 1 into z था ना, this divided by 2. So EBP is directly proportional to this much amount of potential. This difference is directly proportional to this. So difference will be directly proportional, क्योंकि अगर तुमने binding energy of proton को लिखा, it will be because of, and if you write the binding, तो जब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इन दोनों को मैंने ऑलमोस्ट सीन से हटा दिया। सो इट्स सोलली डिपेंडिंग ऑन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दैट। See, I cannot do anything with the voice. Why it is happening, I don't know.
नेटवर्क यहाँ पे फुल दिखा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैम लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो बस, ये जो EBP इज इक्वल टू EB प्लस EBN जो लिखा है आपने। हाँ, मैंने बोला ना कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को निकाला मैंने। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी बिकॉज ऑफ बोथ रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसको मैंने लिखा EBE बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, EBN बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, आई मीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम ओवरऑल, दैट इज EBN। सो ओवरऑल इन दोनों को मैंने माइनस किया क्योंकि ऑलमोस्ट माइनस होंगे। ठीक है, अगर माइनस नहीं भी होते हैं तो भी अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे ना, EBP minus EBN will be directly proportional to what? EBE, EBE proportional. That is why I wrote this. I mean, that is why I said first be written as R naught A का power 1 by पॉजिटिव कैसे होगा और नहीं होगा, लेट अस टॉक अबाउट इट। जैसे देखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, and because of repulsive force binding energy will decrease. But for the neutron there is only attractive force, there is no repulsive force acting, so binding energy of proton will be lesser. I mean, this is less than that of EBN. क्यों हुआ लेस? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है। एंड रिपल्सिव फोर्स का टेंडेंसी क्या होता है, इट विल मेक बाइंडिंग एनर्जी लेस। ठीक है, डन है। ओवरऑल इट फॉर्म। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन के सिस्टम की एनर्जी बढ़ जा रही है, सो इट इज नॉट रिलीजिंग मोर एनर्जी। ओवरऑल ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, सो than that of EBN, so this term won't be positive, this will be negative। उसके बाद बोलता है EBP increases if the nuclear undergoes a beta decay emitting a positron। positron कब निकलता है? when proton gets converted into neutron plus positron, right? So if proton is getting converted into neutron, less number of pair will be left and hence less repulsive force, and less repulsive force means more binding energy। So यहाँ पे पूछ रहा है EBP increases if nucleus undergoes a beta decay emitting a positron। Yes, that will be correct, because जब beta decay होगा emitting a positron, proton is becoming neutron, so less number of proton, less repulsive force, and hence more binding energy। So binding energy का रिलेशन क्लियर है, मोर अट्रैक्टिव सिस्टम होगा, अगर अट्रैक्टिव सिस्टम ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी इज मोर, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, एज रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी विल डिक्रीज, एज अट्रैक्टिव फोर्स विल इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी विल इंक्रीज। इट इज लाइक दिस। ठीक है, so this is the thing। चलो लेट्स डू दिस। अगर हर्षिता कुछ डाउट है यू कैन सेंड मी, ठीक है, तो मुझसे पूछ लेना, नो वरीज।
शिता सिंस करेक्ट। और कुछ दिख रहा है क्या? शायद एक ऑप्शन और करेक्ट है। ठीक है, चेक करो। सभी लोग चेक करो, बताओ क्या क्या आ रहा है। Anyone else who got something? I feel like you must be getting it, right? Simple conservation of energy, momentum thing. Not conservation of energy, conservation of momentum and energy release concept. है ना? See, what will be the thing here? There is a heavy nucleus N at rest, undergoes a fission. Okay? Whenever fission happens, we know the concept of mass defect. And here mass defect is indicated by delta. It is always equal to mass of reactant minus mass of product. So let's say mass of N is Mn, mass of P is Mp, that is given in the question. Mass of Q is Mq. So delta will be Mn minus Mp minus Mq into C ka square, right? Yes, Himanshu. These two are correct. One more is correct, I guess. Okay. So delta will be equal to mass defect is equal to how much? Mn minus Mp minus Mq. This is mass defect. What will be the amount of energy released when P and Q is getting formed? So that is equal to mass defect into C ka square. This much. And that energy will get shared by both P and Q. ठीक है. So let's say P has kinetic energy Kp and Q has kinetic energy what Kq. Then you can easily say Kp plus Kq will be equal to E. ठीक है. Second thing, उसके बाद अगर आप सोचो ये सिंपल ऐसा केस है, there is something and that is getting broken into two parts. So nuclear reaction happens because of something internal happening, right? And when internal forces or internal factors are involved, we can conserve momentum. So if we consider this as a system, initial momentum is what? Zero. Final momentum has to be zero also. It means if nucleus P, because of kinetic energy, will move in this direction, nucleus Q should move in this direction, such that mass of P into velocity of P will be equal to mass of Q into velocity of Q. So these are the basic equations that we are going to use. अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला था, EP plus EQ, energy shared by P plus energy shared by Q, or energy of P plus energy of Q is equal to C square delta. Yes, that's correct. Now हमसे पूछ रहा है EP का वैल्यू क्या होगा. So how we can calculate EP? कैसे निकाल सकते हैं बताओ. How you can calculate? EP plus EQ तुम्हारा क्या दिया हुआ है? That is given as E. And E का वैल्यू we already know, that is C square delta. ठीक है. So हमें निकालना है EP. तो चलो इसको मैं E से ही इंडिकेट करती हूँ. So EP plus EQ को आप क्या लिखोगे? मोमेंटम के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं. P टू P इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर 2m k.
तो एनर्जी को अगर मुझे मोमेंटम के टर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखना चाहिए मुझे, 2m k। सो काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे आप लिख डालो ई क्यू मीन्स मोमेंटम ऑफ क्यू, दैट इज एम क्यू वी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2m q, and this is equal to how much, c square delta। ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ vq, vq वी नीड टू पुट, vq यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, बट दैट विल कम अगेन इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो वी नीड टू डू समथिंग एल्स। और वो एल्स हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मोमेंटम तुम्हारा क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है, एमपीवीपी इक्वल टू एम क्यू वी क्यू। मोमेंटम को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एमपीवीपी को लिख सकते हैं 2 MPEP इक्वल टू 2 MQEQ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। डन है। So from here you can clearly see, square the both side of this equation, you will get MPEP is equal to MQEQ। अब हमारे पास सॉल्व करना इजी हो गया, यहाँ से EP प्लस EQ क्या है, E है। सो EP हमें निकालना क्या था, EP निकालना है ना, यस। EP प्लस EQ को आप लिख डालो, EQ को क्या लिखोगे आप, MP बाई MQ into EP। This is equal to delta square, sorry, not delta square. Actually, I wouldn't sleep last night properly, so my mind is not working properly. I'm really sorry. कैलकुलेशन तुम लोग प्लीज देखते जाना। डेल्टा सी का स्क्वायर, ईपी को अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट व्हाट, एम क्यू प्लस एम पी बाई एम क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर। सो ईपी इज इक्वल टू हाउ मच, एम क्यू डेल्टा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम क्यू प्लस एम पी। इज इट करेक्ट? ओके, एम पी, नो इट डजंट लुक करेक्ट, मैंने कुछ गलती करी क्या? हाँ गलती किया क्या, क्या किया मैंने, देखो एक बार चेक करो। एनीवन हु कैन स्पॉट दिस? एक सेकेंड, एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देती हूँ। व्हाट मिस्टेक वी डिड, एनीबॉडी? Option correct I have written as A, B, D. B I have written as correct. Then it should be. It is not correct, but if this equation solution is correct, then option is wrong. Oh, what is this? Yes, I need to check the answer sheet. Maybe this is not correct. ठीक है? We can check that. Actually, this is wrong. है ना, क्योंकि हमने सॉल्व तो किया, सब कुछ सही लिखा है यार। दिस इज दिस, सो आंसर विल बी दिस वन। दिस इज नॉट करेक्ट। लेट्स चेक द सी ऑप्शन। सो दिस इज MPVP equal to MQVQ. That is correct, right? So C is correct. And what is this magnitude of momentum for P as well as Q? So momentum का वैल्यू हमने क्या लिखा, रूट अंडर 2MQ, Q के लिए लिखते हैं EQ। एक काम करते हैं, देखो अगर डी ऑप्शन करेक्ट है तो बी रॉन्ग आएगा। लेट मी चेक, ठीक है। जैसे डी ऑप्शन के लिए हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है ना। अभी अभी हमने क्या निकाला, ईपी निकाला। सो मोमेंटम ऑफ पी या क्यू दोनों ही सेम है, और मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, रूट अंडर 2 MPEP, ठीक है। सो रूट अंडर 2 MP इंटू ईपी। ईपी का वैल्यू पुट करो, ईपी कितना लिखा है मैंने, MQ delta C square divided by MP plus MQ. So this is equal to how much? 2 delta C square root under into root under how much? MP MQ divided by MP plus MQ. ठीक है।
हमारे ऑप्शन में क्या दिया है, म्यू इज इक्वल टू एन पी एन क्यू बाई दिस, टू म्यू डेल्टा. यस, वी आर गेटिंग द सेम थिंग, राइट? टू, दिस इज म्यू, and this is which is written what, mu is equal to this much, c into this. Yes, so answer will be root under this. अगर आप कर रहे हो तो c स्क्वायर का रूट लोगे, क्या हो जाएगा c. so this is c into 2 डेल्टा, इसको क्या लिया है, म्यू. तो म्यू, आंसर इज दिस. so d is correct, right? so if d is correct, it means b is incorrect. ये मैंने ऑप्शन में गलत लिख दिया है. so option a is correct, b is incorrect, c is correct and d is correct. Correct options will be what? A, C, D. Everyone agree? अच्छा, सबका B कैसे आया था, मुझे ये बताओ. How everybody got B? मैम इसमें क्यू का नहीं चेक करेंगे? लाइक हमने पी का तो चेक कर लिया मोमेंटम. किसका, Q का? यस मैम, किस दोनों का ऑप्शन सेम में? है. D मैम में? डी ऑप्शन में. B ऑप्शन. मैम डी में हम लोग हाँ, D क्यू का में, D में मोमेंटम दोनों का चेक ही नहीं मोमेंटम करेंगे? सेम है ना. P एंड Q का मोमेंटम सेम लिया ना हमने, मोमेंटम कॉन्जर्वेशन. यस मैम. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर P एज वेल एज Q इज दिस. सिर्फ एक का निकाल लो, क्योंकि यूनिवर्सली यू नो वन थिंग कि P एंड Q आर शेयरिंग द सेम मोमेंटम. From the concept of conservation of momentum, you don't need to calculate both, you just calculate one, check if that value is this or not. If yes, take it, not then other के लिए भी नहीं होगा. ठीक है. so यस मैम. this is, चलो do this now. कैलकुलेशन थोड़ा सही से देखा करो, ठीक है. तो अगर तुम लोग ये भूल गए हो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, पहले फॉर्मूलेज को दिमाग में डाल दूं. सीरीज कैसे हमें मिलता है, हमने पढ़ा है ना, बाल्मर सीरीज एंड ऑल. देखो, लाइमन सीरीज हमें कब मिलता है, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन वी गेट लाइमन सीरीज. और इसके वेवलेंथ का हम फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं, वन बाई लैम्डा आर, वन बाई एन फाइनल, एन फाइनल इज वन का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल, इनिशियल कैन बी एनीथिंग ग्रेटर देन वन, सो इट कैन बी टू थ्री समथिंग. इट इज दिस. This lies in which region? This lies in ultraviolet region. उसके बाद we get Balmer series. Balmer series we get when excited electron jumps from any other state to n equal to 2. So if you will write the formula of wavelength, NF will become 2 and NI will be greater than 2. ठीक है. Third, this lies in visible region. You can see it colored. And third one is what? That is your Paschen series for it. From any state to n equal to 3. Accordingly, we will put in the formula. And then there are this bracket series and P-fund series. So these two series, this series lies almost in infrared region. And this is ultraviolet, this is visible. Okay? Formulas of wavelength is like this. Done? अब तुम्हें निकालना क्या है, क्वेश्चन में चले जाओ. लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हुई है, थोड़ा सोचो और करो और मुझे बताओ व्हाट आंसर्स यू आर गेटिंग. ओके, हर्षिता, यस, दैट्स इट, करेक्ट. When you will get the longest wavelength for the least energetic jump, right? And least energetic jump in Balmer series will be from 3 to 2, है ना? And shortest wavelength means most energetic jump, that will be from infinity to 2. Done है. तो
ओवरलैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे तुम्हें ये देखना है कि जो लाइमन और बाल्मर सीरीज के जैसे यहाँ पे तुमने निकाल लिया ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो यू हैव कैलकुलेटेड कि बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी कितने एनर्जी की लाइट रिलीज हो सकती है और मिनिमम कितने एनर्जी की हो सकती है। सो यू नो द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ बाल्मर सीरीज। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाइमन और बाल्मर सीरीज के जो स्पेक्ट्रा है क्या वो ओवरलैप करेंगे, यानी कि द फोटोन दैट इज गेटिंग रिलीज्ड इन लाइमन, इज देयर चांस सेम photon will also get released in the case of Balmer? That's the question. Okay. Okay. Others, please. फर्स्ट आया सबका करेक्ट हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है बताओ। मैम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। बी कैसा लग रहा है तुम लोगों को? बी सी डी में क्या दिखता है? देखो, अगर तुम लोग वेवलेंथ निकाल रहे हो तो ऐसे निकालना, एच सी बाई लैम्डा कर रहे होगे ना। लैम्डा तो तुमने निकाल लिया होगा, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। एच सी का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लेकर चलना बाय लैम्डा, अगर ऐसे निकाल रहे हो तो। बट एनर्जी इज नॉट इन नैनोमीटर, बट यू कैन राइट है ना -13.6 वाला करके, तो दैट विल बी मोर इजियर। एच सी बाई लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी मैंने ये किसको लिख दिया है ऐसे, अच्छी, आई एम डूइंग ब्लंडर्स एनीवे। यस, अगर अगर तुम्हें वेवलेंथ का वैल्यू पता है इन नैनोमीटर, देन यू विल पुट दैट नैनोमीटर हियर, ठीक है। देन यू विल गेट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज दैट फॉर्मूला, हम लोग यूज करते हैं ना इस अप्रोक्सीमेशन को। So put lambda value in nanometer, you will get energy in electron volt. That is what I wanted to say. Sorry. चलो let me discuss then. ठीक है, the ratio of longest wavelength to the shortest wavelength in Balmer series. Longest wavelength के लिए हम क्या लिखने वाले हैं? Shortest jump. इसका मतलब है this will be 1 by what? 2 का स्क्वायर माइनस फाइनल इधर लिखना है ना 3 का स्क्वायर. So this is equal to r into 9 minus 4, that is 5, by this is how much? 36. So longest wavelength is how much? 36 by 5r. What will be the shortest wavelength? Shortest wavelength के लिए आप क्या करोगे? Longest jump लोगे. So longest jump का मतलब from infinity to 2. So initial तो fix है, यही होगा -1 by infinity, which is 0, right? So lambda shortest कितना हो जाएगा? 4 r by 4, right? r by no 4 by r. मैंने सब कुछ ऑपोजिट कर दिया यहाँ पे, 36 by 5r किया, सही किया ना? हाँ, एंड हियर दिस इज 4 by r. अब आप रेशियो लोगे शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, सो 36 by 5r into 4 into r, so this will give you how much? 9 by 5. This is correct. ठीक है, बी ऑप्शन तो हमें चेक करना पड़ेगा निकाल कर, तो मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर दिया है, आई विल शो यू, दे वोंट ओवरलैप, हियर आल्सो दे वोंट ओवरलैप, ठीक है।
ये तुम लोग देखो एग्जाम में इतना कैलकुलेट करने मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि चार चार वैल्यूज निकालने में यहाँ पे वी नीड टू कैलकुलेट लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी, रेंज में मैच करना होगा। सपोज करो लाइमन का रेंज आया एक्स टू वाई एंड बाल्मर का रेंज आया एनर्जी या वेवलेंथ का ही, एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, वेवलेंथ से भी पता चल जाएगा। सो लाइमन का वेवलेंथ का रेंज आया एक्स वाई, इसका आया जेड टू समथिंग पी, ठीक है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि इसके रेंज में इसका कोई वैल्यू लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाइक कर रहा है तो ओवरलैप करेगा, नहीं लाइक कर रहा तो नहीं ओवरलैप करेगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू, यस हर्षिता, दे वोंट ओवरलैप, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, don't overlap means this is correct, sorry, this is also correct, and there is an overlap between wavelength ranges of Balmer and Paschen। ये तो ऐसे भी नहीं करेगा, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेकिन नहीं, बाल्मर के बाद ही पास्चन आता है, सो यू नीड टू कैलकुलेट एंड चेक, ठीक है। अगर बाल्मर और पी फंड पूछता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाल्मर और ब्रैकेट पूछता है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाल्मर एंड पास्चन आर कंटिन्यूअस सीरीज, राइट, so they may be overlapping, you need to check, and when you will check you will get that there is also no overlapping। ऑप्शन सी में जाते, wavelength of Lyman series is given by this, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer। तो लाइमन सीरीज के वेवलेंथ का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन का स्क्वायर, ये लिखोगे। एंड लैम्डा नॉट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लॉन्गेस्ट जंप, एंड दैट इज इक्वल टू आर, बिकॉज फॉर लॉन्गेस्ट जंप एन विल बी इंफिनिटी। अब मुझे इसी को एडजस्ट करना है, डन है, ठीक है। और m तुम्हारा, m इज एन इंटीजर, हाउ वी विल डू दिस, so I have also done this calculation क्योंकि actually my mind is working less, so I have done more the work, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस कैलकुलेशन ही करना है। ध्यान से देखो, सेम चीज किया मैंने, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इतना आया, ठीक है, एंड वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला इज दिस, जनरल फॉर्मूला को सॉल्व करके लिखो, आर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। सो लैम्डा का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर बाई आर एन स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई आर को क्या लिख दोगे, लैम्डा नॉट। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है लैम्डा का, लैम्डा नॉट एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1। लेकिन अगर तुमने ऑप्शन देखा ध्यान से तो वहां पे था लैम्डा नॉट 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर समथिंग, राइट। सो वी नीड टू राइट इट इन दिस फॉर्म, और इस फॉर्म में लिखने के लिए वी कैन डू वन थिंग, एन स्क्वायर से 1 को माइनस कर दो, प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। सो देन यू विल गेट 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1। Now we need to see if this n square minus 1 can be equated to m square, where m is always integer, where n is always integer. Sorry, where m is always integer, that was given in the question. So अगर मैं यहाँ पे लिखूं n square minus 1 equal to m square, ठीक है, तो n square will be equal to, सॉरी, n square minus 1 क्या हमेशा इंटीजर हो सकता है, पहले सीधा सीधा ये चेक कर लो। So where m is always integer, that was given, right? So n square minus 1 का रूट अंडर जो होना चाहिए, इसका जो रूट होना चाहिए वो हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। इज इट पॉसिबल ऑलवेज, नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि n is the number of what orbit, if orbit is 4, let's say it's 17, root under 17 not integer you are going to get, so that option is correct or incorrect, that is incorrect। चलो ऑप्शन फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या था, एम इंटीजर बोला था, एम स्क्वायर अगर इंटीजर बोलेगा तो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द थिंग, व्हाट इज दिस, एम स्क्वायर वेयर एम इज एन इंटीजर, ठीक है, सो दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। चलो वी विल गो बैक टू अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज को निकाल कर सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है, तो चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले पढ़ा नहीं है, सो दिस इज जेईई एडवांस के सिलेबस में ही है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू गो थ्रू द क्वेश्चन, ठीक है, सही से तुम लोग क्वेश्चन को रीड करो, आई विल एक्सप्लेन देम।
Everyone read it. Take 2 minutes. 2 minutes to read it. Okay, let me check. Himansu. चलो ठीक है. Let me make you understand what is this basically. So, in an X-ray tube, electrons emitted from a filament carrying current. Actually क्या होता है ना, देखो X-ray tube से जब हम कैरेक्टरिस्टिक और कंटिन्यूअस एक्सरे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, सिंपल सा सिस्टम है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन जैसी चीज है. ऐसे ना बनाकर मैं इसको सिंपली ऐसे बनाती हूँ. ठीक है, सपोज कर लो, इसको और सिंपल करती हूँ. इस पे लाइट फॉल करवाया तुमने. दिस इज let me make it like this. Let's say light is falling like this, and this is a photosensitive material. So if there is a photosensitive material and light is falling on it, what will happen? Electron will get emitted. ठीक है, so यहाँ से निकला electron. Now what we are doing, we are keeping one more plate here, and we are connecting with a battery sort of thing, such that this is negative and this is your positive. Since this is a positive terminal thing, ठीक है, the potential difference we have supplied in between the space, and since this is a positive sort of thing, it will attract electron. Done it? So basically what happens in X-ray tube, there is one structure which will emit electron. So electron that is coming out of this structure is not that energetic. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट हैज मैक्सिमम एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट minus work function. This is not, this is in the range of electron volt, right? But we need highly energetic electron, and that is why we supply it with potential difference. And when we supply charge with potential difference, charge will accelerate. क्योंकि हम जानते हैं work done per unit charge is equal to potential difference. And if you allow charge to move in a region of potential difference, work will get done on it, and that work will be equal to Q delta V, and this will get converted into its kinetic energy. ठीक है?
तो ओवरऑल यहाँ पे ये हो रहा है कि एक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वहां पे एक पोटेंशियल का रीजन है विच इज accelerating this charge, and then this accelerated charge is hitting the target. इसको हम क्या बुला रहे हैं? इसको हम बुलाते हैं टारगेट। अब ये टारगेट क्या है तुम्हारा? टारगेट से बेसिकली हमारा कंसर्न ये है कि वी आर बम्बार्डिंग दिस मटेरियल विथ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। व्हाई? सो दैट एक्सरे कैन गेट एमिटेड। अब देखो एक्सरे कैसे एमिट होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक्सरे कैसे इमिट होगा? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये टारगेट, दिस इज मेड ऑफ सर्टेन एटम्स, राइट? एंड टारगेट हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसका पहले, उससे भी पहले मैं मैकेनिज्म बता दूं। जैसे क्या होगा? ये दिस इज एटम, यू आर गिविंग इट एनर्जी। दिस एटम विल हैव सर्टेन एनर्जी स्ट्रक्चर। इसके n इक्वल टू 1 का सर्टेन एनर्जी होगा, इसके n इक्वल टू 2 का सर्टेन एनर्जी होगा, एंड सो ऑन। ठीक है? दिस टारगेट एटम हैज इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज हीटिंग द एटम, इट इज गिविंग इट एनर्जी। देन जब एक हाईली एक्सेलरेटेड ट्रक किसी चीज में टकरा जाए तो वो चीज टूट सकता है क्योंकि ट्रक ने उसको अपनी एनर्जी दे दी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इज गिविंग इट्स एनर्जी टू द एटम, एंड एटम को एनर्जी देने का मतलब उसके ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल that will gain energy, and that may jump to the excited state. So yes, here the target is to make this electron jump to the excited state, and when they will jump, energy difference is maintained in such a way, I mean atom is selected in such a way that energy difference when electron will jump from higher state to lower state will always fall in x-ray region. ठीक है? तो बेसिकली दिस एक्सपेरिमेंट में दो तरह के एक्सरे जनरेट होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और दूसरा होता है कंटिन्यूअस एक्सरे। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तुम्हारा कैसे जनरेट होगा? व्हेन this energy of electron is getting received by the ground state electron of this atom. This ground state electron atom will get excited and they will reach to their higher, and from there within the time 10 to the power minus 8 seconds they will again jump back. They will try to jump back, right? And while jumping back they will generate energy, and those energy won't be the continuous energy. तुम लोगों ने स्पेक्ट्रा पढ़ा है ना? स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं होता आइसोलेटेड एटम का। ठीक है? जैसे हाइड्रोजन के केस में ही ले लो, एक घर उसका होता है -13.6, दूसरा घर कहाँ होता है? व्हाट इज द थिंग? माइनस समथिंग कितना होगा बताओ? 3 पॉइंट समथिंग, 3.4। 3.4 होता है। उसके बाद क्या होता है? 1 पॉइंट समथिंग, राइट? लाइक दैट। अब तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, तो सपोज कर लो ये दोनों के डिफरेंस है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुमने इसको एनर्जी दे दी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा? इट वोंट एक्सेप्ट दिस एनर्जी, क्योंकि एट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देयर इज नो होम अवेलेबल। हवा में तो नहीं रहेगा, इट रिक्वायर्स होम। तो वो उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करता है जिस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बाद इट कैन रीच टू सम होम। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इलेक्ट्रॉन विल ओनली एक्सेप्ट certain amount of energy, and for those energies it will go to certain home, and from that home when it will try to come back again to the ground state, it can come back in different ways, but only it will release discrete energy. जैसे अगर n equal to 3 से वो jump करता है तो either वो पहले 2 पे आएगा फिर 1 पे आएगा। in this process it will generate 2 energies. ठीक है? and either it can come directly from 3 to 1. In this case it will generate another energy. So overall only 3 energies are getting generated. Not all energy between E1 and E2 is getting generated. So this sort of spectra that we are getting because of excited electron coming back to the ground state is not a continuous spectra. There are discrete energy levels present. डन है? तो यहाँ पे भी जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब एटम को मिलता है और एटम के एक्साइटमेंट के बाद जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट विल फॉर्म योर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ जैसे यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करी है, सो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ही हुआ कि ओनली डिस्क्रीट वेवलेंथ्स विल बी देयर, ओनली डिस्क्रीट एनर्जीज, नॉट ऑल एनर्जी। ठीक है?
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे जनरेट होता है, हाउ कंटिन्यूअस एक्सरे गेट्स जनरेटेड। तो कंटिन्यूअस एक्सरे तब जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कोलाइड किया एंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे घट रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विल डी एक्सेलरेट, एंड यू ऑलरेडी नो इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग और डी एक्सेलरेटिंग, इफ इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट it will radiate electromagnetic wave. Done. And since it will gradually deaccelerate to zero, almost it will release energy of all wavelengths starting from certain value. So that is why that will form continuous x-ray. ठीक है। सो हमें यहाँ पे दो एक्सरे मिलता है, एक है कंटिन्यूअस, दूसरा है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक। देयर इज वन लॉ दैट इज मॉसलेस लॉ, और उन्होंने ये बोला था कि जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है उसका रूट अंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, बस ये एक याद रखना, कॉन्सेप्ट इतना है, ये पता है, यू विल बी एबल टू आंसर। अब चलो ऑप्शन पे चलते हैं या क्वेश्चन पे ही चलते हैं पहले। इफ द फिलामेंट करंट इज डिक्रीज टू हाफ, सारी सिचुएशन को ध्यान से लिखते हैं, ठीक है। सो करंट को हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज टू 2v, decreased or increased, yes, increased to 2v, and separation distance is reduced to d by 2, so d is becoming d by 2. Now we have to answer these things at the cutoff wavelength, as the cutoff wavelength will reduce to half and the wavelength of characteristic x-ray will remain the same. What is this cutoff wavelength? Just I need 30 seconds break, okay? Yes, anybody who can answer? Just I need some more seconds. What is this cutoff wavelength? Cutoff तुम लोग वर्ड पहले भी सुने हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सुना होगा। कटऑफ मतलब क्या होता है? मिनिमम वेवलेंथ जो इमिट हो सकती है। यस। सो जब तुम एक्सरे ट्यूब में, जब तुमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, मैक्सिमम एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन को कितना दिया, ईवी, ईवी नॉट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट था तो ईवी नॉट दिया, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस मच ऑफ एनर्जी कैन बी गिवन टू इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है। सो मैक्सिमम इतनी एनर्जी लेकर वो ऊपर कहीं अगर घर है तो जा सकता है, and if from that home it will jump back, then maximum this much amount of energy will get released. So the minimum wavelength that will that we will get in x-ray spectra will be equal to will be given by what, minimum के लिए wavelength के लिए energy will be equal to this much. तो आप इससे यहाँ से hc by lambda करके निकाल लेना, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट lambda nanometer. I hope I have written everything correct. Yes, from here you will get wavelength in nanometer, okay, because energy is given in ev naught. So this is done, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट अब क्या हो रहा है, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ। हमने क्या किया, पोटेंशियल के साथ कुछ किया है क्या, पोटेंशियल को डबल कर दिया है। सो पोटेंशियल को डबल करने का मतलब क्या है, हमारी एनर्जी हो गई डबल। अब देखो एनर्जी अगर डबल हो गई, 2e हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, एनर्जी से वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी अगर डबल हुई तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, यस, एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का वेवलेंथ सेम रहने वाला है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप देखो तो ट्रांजिशंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो आई मीन अगर पहले कम एनर्जी से भी जो जो ट्रांजिशन हो रहे थे
ज्यादा एनर्जी से भी ऑलमोस्ट, जैसे मैं तुम लोग कैसे समझाऊं, गलत चला जाएगा ऐसे। और एक काम करो, ओके, लेट मी रिड्यूस, आई मीन रिमूव एवरीथिंग। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तुम्हें कैसे मिला था? यहाँ इलेक्ट्रॉन के जंपिंग से मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या है, इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या है, ठीक है। कट ऑफ वेवलेंथ क्या बोल रहा है? कट ऑफ वेवलेंथ ये कह रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ दैट वी विल गेट इन द एक्सरे स्पेक्ट्रम, it will include both characteristic x-ray and it will include both continuous x-ray, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सॉर्ट ऑफ विल डिपेंड ऑन कि एटम तुमने कौन सा लिया है, बिकॉज कौन सा एटम है उस पर डिपेंड करेगा कि एनर्जी डिफरेंस लेवल्स की क्या क्या है। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज बेसिकली फंक्शन ऑफ द जेड यू आर पिकिंग, एंड दैट इज वाई कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए जो मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा था ना अभी अभी, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी लिखा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड. So it is function of atomic number. But overall, if I talk about cutoff wavelength, so that will depend on कि इलेक्ट्रॉन जो हमने उसको जितना एनर्जी दी थी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, एवी नॉट, मिनिमम कितना रिड्यूस हो सकता है, आई मीन मिनिमम तो जीरो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, इतनी। और कंटिन्यूअस एक्सरे कैसे जनरेट हो रहा था? बिकॉज इलेक्ट्रॉन वाज लूजिंग इट्स एनर्जी। तो मैक्स मिनिमम वेवलेंथ की अगर बात करूं तो दैट वेवलेंथ विल करेस्पॉन्ड टू एनर्जी ईवी नॉट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, यस, एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम, yes, it won't get affected because characteristic x-ray is depending on कि उस एटम के सेल्स के बीच की एनर्जी डिफरेंस क्या है, ठीक है। बी क्या है तुम्हारा? कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज विल रिमेन द सेम, नो, cut off wavelength is going to change. Cut off wavelength will reduce to half and the intensities of all the x-rays will decrease. Intensity will depend on how many electrons you are bombarding, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ हमने कुछ किया है क्या? इलेक्ट्रॉन के साथ हमने कुछ किया? current is reduced to half, yes. If we are reducing current half, then less number of electron is reaching the atom, ठीक है। so if less number of electrons are reaching, less number of collision will happen and hence intensity of x-ray will be less. Intensity of x-ray कहने का मतलब how many photons of x-ray are getting generated, that will depend on how many collision of electron with atom is happening or how many electrons are speeding down, ठीक है। क्योंकि दोनों ही एक्सरे जनरेट होगा, कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, बोथ विल डिपेंड ऑन व्हाट इंटेंसिटी, ठीक है। द कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 times लार्जर, नहीं है तो गलत है। सो दिस इज दिस, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस, ठीक है, इसको करो। अगेन ये बहुत इजी है, सिंपली यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। So put in the formula and try to get the answer. सॉरी, एनर्जी को यहाँ पे बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है, यानी कि जैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे यूज किया था ना, वी कैन यूज। ओनली डिफरेंस इज हियर फोर्स इज नॉट गिवन, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ आर इज गिवन, ठीक है। तो देन यू हैव टू कैलकुलेट थिंग। So same as first question you have to do. Only variation is potential energy as a function of R is given.
just do the simple things. I mean, two equations you need to write. One you can use mv square by r equal to force. Another is angular momentum का thing. क्योंकि Bohr model को हमें लेना है. So angular momentum in nth orbit will be equal to nh by 2 pi. You can use two things. ठीक है. एंड फोर्स को आप कैसे लिखोगे? यू नो ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस du by dr if force, if this is a conservative field, and since we are talking about the charge going around nucleus, we are talking about electrostatic sort of force, right? So conservative, we can use this formula F equal to minus du by dr. If you will do, you will get the value of force equal to minus F. So magnitude wise it is F. Sohel, okay, yeah, that's correct, I guess. More options are true. ठीक है, you people will do this, you will be able to do this. क्या करोगे? सबसे पहले mv स्क्वायर बाय r को क्या लिख दो? फोर्स, ठीक है. एंड यू नो nh by 2 pi is equal to mvr. so if you have to calculate, let's say velocity, तो तुम यहाँ पे इसको nh क्रॉस लिखो, more easier to write. v can be written as nh cross by r. so here m v square n square h cross का square by m square r square is equal to what? into r is here is equal to f. ठीक है. so अगर आप यहाँ से देखो तो r cube is directly proportional to n का square. so r is directly proportional to n का power 2 by 3. and if r is directly proportional to n का power 2 by 3, velocity को क्या लिखोगे? velocity is directly proportional to n by r, and velocity is directly proportional to n by r. क्या है? n 2 by 3. so that is equal to n minus 1 by 3 दिख रहा है क्या? p also, okay, so हाँ, it feels correct. तो यहाँ पे तुम लोग प्लीज कैलकुलेशन देख लेना, मे बी मैंने कुछ गलती किया हो, आई डोंट नो. so you will be getting the value of n is directly proportional to half or something velocity. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कोई चाप नहीं है. व्हाट एल्स यू हैव टू कैलकुलेट? एनर्जी इंडिकेटेड बाय ई. एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी मैंने बोला है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक. पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन, सो दैट इज इक्वल टू एफ आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. पुट करना, चेक करना क्या आ रहा है. ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट. यस, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, बट दिस थिंग ऑल्सो यू कैन इजीली डू. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ चुके हो. लेट्स डू दिस वन. इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जब तुम्हारा अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा में क्या होता है, गामा, ये बीटा प्लस बीटा माइनस में क्या होता है. सो लेट्स रिवाइज दिस थिंग थ्रू दिस. अगर तुम लोग भूल गए हो तो मैं एक चीज रिवाइज कर दूं. अल्फा डीके में क्या होता है? इफ देयर इज एक्स having atomic number z, mass number a, then in alpha decay it will become y with atomic number z minus 2, mass number a minus 4, and alpha particle gets generated. What happens in beta plus decay? So basically in beta plus decay or beta minus decay, क्या होगा? There is here there is neutron and that will break into proton plus electron. ठीक है, and here there is proton and that will get broken into neutron and positron. so in beta plus decay, in both decay, beta decay में ही mass number is not going to change because proton is getting converted to neutron or neutron to proton, and mass number is equal to neutron plus proton. ठीक है, but atomic number will get affected. In beta plus decay it will decrease by 1, in beta minus decay it will increase by 1. ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम्हें याद रखनी है, वो ये कि बीटा प्लस का जो रिएक्शन है ना, इट कैन ओनली हैपन इनसाइड न्यूक्लियस. इट कैन ओनली हैपन इनसाइड न्यूक्लियस. क्यों? क्योंकि
यहाँ का जब आप मास डिफेक्ट निकालोगे ना, दिस इज नेगेटिव. And if mass defect is negative, it means it's an endothermic sort of reaction is going to happen. It requires the environment of nucleus for this reaction to happen. So it cannot happen outside nucleus, only always inside nucleus. And this reaction can happen both inside and outside. अब क्वेश्चन पे अगर आप आते हो तो X का मास क्या था 232 और एटॉमिक नंबर क्या है 90. So this is 90, this is 232. And then this is becoming 82 and this is becoming 212. हो क्या रहा है? Let n and n beta be the number of alpha and beta minus particles respectively. तो दो तरह का डिके हो रहा है, अल्फा डिके हो रहा है और बीटा माइनस डिके हो रहा है. यही हो रहा है ना, दो ही चीज हो रहा है. अब देखो जो भी मास चेंज हुआ होगा दैट मस्ट हैव हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ अल्फा डिके. हर्षिता, यस, वेरी गुड. तो दैट मस्ट हैव हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ अल्फा डिके. मास कितना घटा है देख लो. दिस इज हाउ मच 21232 कितना होगा 20 है ना. मास घट गया 20 से. एक एक अल्फा डिके में 4 मास घटता है. ठीक है. सो इन इन आई मीन 20 मास घटने के लिए कितना अल्फा डिके हुआ होगा 5. सो 5 अल्फा पार्टिकल डन है. एंड if you consider 5 alpha particle means atomic number must have got decreased by 10 क्योंकि एक अल्फा डिके में 2 से घटता है. तो यहाँ 10, अगर 90 से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 80. बट हियर मास नंबर इज व्हाट 82 मीन्स 2 बढ़ा है. तो 2 बढ़ा है का मतलब क्या हुआ, 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा. यानी कि बीटा माइनस कितने डिके हुए हैं, तो 5 अल्फा डिके 2 बीटा डिके. ठीक है. दिस इज ऑल वी नीडेड टू नो इन दिस. देर आर सम मोर क्वेश्चन. अगेन इस क्वेश्चन में भी तुम्हें कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूलाज मैंने ये लिस्ट लिख दिया है यहाँ पे, तुम लोग इसके थ्रू जाना. यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. इसके बाद कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन में सेम ही चीज करनी है जो अभी तक हम करते आए हैं. ठीक है. तो तुम लोग एक काम करोगे, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, यू पीपल विल बी डूइंग दिस 3 क्वेश्चन. ठीक है, कर लोगे तुम लोग? व्हाट यू से? और कल तुम लोगों का टेस्ट है. ठीक है. सो टेस्ट के लिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है. सबसे पहले सॉर्ट आउट करना कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे लिए इजी जा रहे हैं. उन क्वेश्चंस को पहले करना है. रैंडमली किसी क्वेश्चन में मत लग जाना, बीट एनी सब्जेक्ट. ठीक है. सो थोड़ा वाइजली टेस्ट देना और सभी लोग देना और राइट टाइमिंग पे देना. वट एवर विल बी द टाइमिंग ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंगली मेक योर सेल्फ सेट इन द एग्जाम. ठीक है. तो कल टेस्ट है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. You all are giving Avanti test, or you all have maybe some of you may have opted for something else. It's normal, but you all should be giving test. ठीक है. सभी लोग टेस्ट देना, कोई भी टेस्ट दे रहे हो, बी रेगुलर टू टेस्ट एंड कीप अटेंडिंग. ठीक है. चलो, किसी को डाउट है तो बता दो. आई एम हियर इफ anyone has any doubt. Ma'am, actually in the previous page you have written energy endothermic. Like me क्लियर कर दोगे कि क्या है? कौन सी हमें वाली? ये तो पता था कि न्यूक्लियस में होता है सर. ये वाली एनर्जी मैम डीके में. अच्छा डीके पीछे में नहीं लिखा था. अच्छा और पीछे जाना है. नहीं मैम, डीके वाला जो अभी लास्ट में क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, अल्फा बीटा डीके. अच्छा वहां तो एनर्जी की कॉन्सेप्ट नहीं है ना. नहीं मैम, बस आपने बताया था कि बीटा प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है. अच्छा तो ये मैम मुझे वाली तो पता चीज, था हाँ हाँ कि हाँ. वो ओके इनिशिएट नहीं होता जब तक ओके पूरे ओके ओके. न्यूक्लियस में ना हो. हाँ तो देखो प्रोटॉन क्या है ना, प्रोटॉन किस में जा रहा है, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में. अगर तुम मास का डिफरेंस निकालोगे ना, यहाँ पे डेल्टा एम निकालोगे ना, तो दैट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये वाला जब टर्म निकालोगे ना तो ये नेगेटिव आता है. तो इफ इट इज नेगेटिव तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता, क्योंकि सारे न्यूक्लियर रिएक्शन तुमने पढ़े हैं ना, डेल्टा एम पॉजिटिव आता है. और इसलिए हर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए वो रिएक्शन हो रहा है बेसिकली. क्योंकि हर सिस्टम चाहता है अपनी एनर्जी को कम करना टू बिकम स्टेबल. कोई भी रिएक्शन हो रहा है और अगर एनर्जी रिलीज होने का टेंडेंसी है तो दैट रिएक्शन विल हैपन नेचुरली. बट यहाँ पे तो एनर्जी डेल्टा एम नेगेटिव हो गया.
इट मीन्स इट इज नॉट नेचुरली पॉसिबल, तो कहीं भी नहीं हो सकता। न्यूक्लियस का इन्वायरमेंट चाहिए उसको, ठीक है। सो न्यूक्लियस मे बी इट इज सपोर्टिंग दिस रिएक्शन टू हैपन इन सम वे, Yes, ma'am. so only inside nucleus this will happen. Okay, ma'am. Thank you, Okay, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, सभी लोग अच्छे से अपना काम करो, टेस्ट को, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।